Khowai, CPIM chief office vandalized at Jubaraj Nagar. Allegations and countercharges fly thick and fast. Well, the BJP makes it 3-1 in Tripura by-polls. Chief Minister Manik Saha wins town Bordwali seat. Congress's Sudeep Roy Burman victorious in 6 Agartala. Congress's CPIM understanding behind members, says BJP. Well, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma visits flood-ravaged Silchar second time in 48 hours. Reaches out to affected people, promises all possible help. And will take support from the BJP to form the government if offered. Senior Shiv Sena leader and rebel MLA camping in Guwahati, Deepak Kisarkar tells Northeast Live. Rebel camp to challenge Deputy Speaker's qualification notice. Hello to all of viewers and welcome to Evening Prime. I'm Aaron Lingdo. For now, let's cut across live to Munich, where Prime Minister Narendra Modi is visiting to attend the G7 summit. Currently, Prime Minister Modi is addressing the Indian diaspora in Germany. डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। 21वीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। साथियों,
आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। भारत ने 2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फोसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर हैं, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में कोविड वैक्सीनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भांति परिचित हैं। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था। शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, पिछले साल हमने अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने $111 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। भारत के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा FDI इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। All right, let's move on now to the big Maharashtra political crisis now. The rebel Shiv Sena MLAs camping in Guwahati are open to form the government with the support from the BJP if the Saffron Party makes such an offer. Well, this big revelation was made by senior Shiv Sena leader and Rebel Party MLA Deepak Kesarkar in an exclusive conversation with Northeast Live editor-in-chief Wasbir Hussain. Kesarkar stated that while they have not had any talks with the BJP so far, the MLAs will not be opposed to an offer from the Saffron Party for government formation. This indeed is a big revelation from the rebel camp. Kesarkar also informed that the rebel MLAs will challenge the Maharashtra Deputy Speaker's disqualification notice. I'm now joined by senior Shiv Sena leader, Mr. Deepak Kesarkar, currently in Guwahati. Mr. Deepak Kesarkar, the Uddhav Thackeray is claiming that they have the coalition on their side, but you have the numbers on your side. Now, what is the status? When are you going to stake claim? The one who has larger number always comes into power, and that is democracy. So we are waiting for our group to be recognized, and whatever wrong decisions which were given by the
Deputy Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, we are going against it in the court of law, and I'm sure we'll get the justice. Now, Aditya Thackeray has just said a short while ago that Uddhav Thackeray had offered the chief minister's post to Mr. Eknath Shinde on the 30th of March. No, this is not, nobody has asked for his post. Actually, he should have had a discussion about realignment with some other party except NCP and Congress much earlier. The main grudge of the people is against Congress and NCP. Right. Now Uddhav Thackeray camp is saying that, the entire coalition is with us. Mr. Sharad Pawar has only recently, offered once again reiterated his support for Mr. Uddhav Thackeray. But my question to you, Mr. Deepak Keshakar, is, has anybody from the coalition also contacted you or Mr. Eknath Shinde to sift allegiance? No, nobody. So it is confirmed now that your camp, that is the Eknath Shinde camp, will form the government with the support of the BJP in Maharashtra. If BJP offers the support, yes, but we have not yet spoken to them for the support. Well, we will come to more stories related to the Maharashtra political crisis in some time. But for now, let's shift focus to Tripura. Well, these are visuals of Tripura Chief Minister and the BJP leader Manik Saha and the veteran Congress leader Sudeep Roy Burman congratulating each other after registering victories in their respective constituencies of Town Bordwali and 6 Agartala. Now, by the look of it, everything seems fine in Tripura, where leaders from two rival parties are demonstrating true spirit of a fair contest by congratulating each other on their success. But barely hours later, this was what happened in the state capital. Clash erupted in Agartala soon after the declaration of the results for the by-polls. The clash erupted outside the Congress Bhavan in Agartala, with the BJP accusing the Congress supporters of pelting stones at the residence of Councillor Shilpi Sen. Now, the BJP accused that when a delegation of the party had come to file a police complaint, Congress workers pelted bricks at them from inside the party office. Ministers Ratanlal Nath and Sushanta Chaudhary rushed to the spot and filed a police complaint. So, dramatic visuals from Tripura capital, Agartala. Meanwhile, the violence was not restricted to Agartala, but the Congress Bhavan in Khowai has also been burned down. Meanwhile, reports also came in that the CPIM office under Jubaraj Nagar constituency has been vandalized. All situation also continues to be tense at the 6 Agartala Assembly constituency, where people are expecting more violence between party supporters in the evening. While the Congress has won the 6 Agartala seat, while the BJP has won the Town Bordwali, Jubaraj Nagar and Surma seats. The BJP is accusing the Congress of winning the Agartala seat by taking the help from the CPIM. Well, what you see on your screens are visuals from Khowai, where violence happened just right outside the Congress Bhavan. And there you have it on your screens, visuals from Jubaraj Nagar. All these incidents happened just right after the the election results were announced this afternoon. This is indeed the CPIM office right there at Jubaraj Nagar. ভাবখানা এমন যে একটা আসনে সিপিএম এর সাহায্যে জয়ী হয়ে ভাবখানা এমন দেখাচ্ছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তারা জয়লাভ করেছে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মীদের কাছে এটাই বার্তা থাকবে সজাগ থাকতে, সচেতন থাকতে, কোনো প্রভোকেশনে ট্র্যাপে যেন পা না দেয়। ষড়যন্ত্র হচ্ছে রাজ্যের পরিস্থিতি বিষিয়ে তোলার জন্য, যাতে কোনো অবস্থাতেই কংগ্রেসের এই ষড়যন্ত্রে পা না দেন। আর একটা আসলে জয়ী হয়ে সিপিএম এর সাহায্যে ওরা ভাবছে যে ওরা ত্রিপুরা রাজ্যটা জয়ী হয়ে গেছে। সারা রাজ্যে যে ওদের বিরুদ্ধে রায় গেছে, জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সেই জিনিসটা দেখছে না। স্বাভাবিকভাবেই তাই কংগ্রেস এই রাজ্যে বিগত দিনে বাড়তে পারেনি। বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যকে মুক্ত করেছে, এখন বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলি, তারপর আমরা পরবর্তী সময়ে আমরা সিদ্ধান্ত।
Meanwhile, Sudeep Roy Burman also visited the police station along with Ashish Kumar Saha after the incident to take stock of the situation. Now, both the Congress leaders met with SP West and apprised him of the situation. Well, later, Roy Burman blamed the police for failing to control the situation. Breakdown of the law and order, criminals taking law in their own hands. Police have completely failed. कितना दूर होगा? 50 मीटर से कम होगा. So police has completely miserably failed to protect the lives and properties of the common people. Just see the mayhem they have caused over here. So all happen in front of the police. They are helpless lot because they have kneeled down before the power politics of the party in power. Meanwhile, we have reactions from West Tripura Superintendent of Police as well. Let's listen in. There was, as you are already aware, today was the election counting day. So, as the election counting was going on, different parties we had given different spaces for different parties so that they can stand there and then they can know about the results. Apparently, during that time, there was one party was going through once about the results were about to be declared. One party people in 3-4 bikes they were going to the another place. So the other party they apparently mistook it for. They thought that these 4-5 bikes are coming to attack them. Then these people attacked on them. One of the person by name Vikas, he was injured. So I think he got 12 stitches on the head. So I say once this happened, then the people came to know that he is a BJP supporter. He was going there with them. So then BJP people thought that some people were doing this one. Then there was mobilization of groups from both people. So then they started mobilizing and the other party also started mobilizing. As we have seen that near Congress Bhavan, the incident was happening here. See, as up till now that I came to know about the information is that there are 3 people have been injured. And no FIR has been lodged. The arrests have not been made, but arrests will be made once the FIR is lodged. We are identifying the culprits who are responsible for this. And we have reactions coming in from the injured BJP supporters who are currently in the hospital. ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল আমরা আমাদের কর্পোরেটর মেমকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কংগ্রেসের কিছু দুষ্কৃতীরা আমাকে হামলা করে আমার মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করে পেছন দিক থেকে করেছিল একটা ভিড় এসে তো তারপর আমি দেখলাম যে আমার মাথায় রক্তপাত হচ্ছে মাথা দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে তখন আমাদের সহকর্মীরা আমাকে প্রথমে আইজিএম হসপিটাল নিয়ে যায় নেওয়ার পর ওখানে আমাকে কিছু স্টিচেস দেয় আর তারপর বলেছে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে না সেটা বাইরেই হয়েছিল সেটা বাইরে ওই রাজু মেডিকেল হল একটা মেডিসিনের দোকান আছে ওই জায়গাটাতে And to give us more details on this big development, I am joined by my colleague Pinaki Das. Pinaki, the violence is not restricted to just 6 Agartala, but there is simmering tension in other parts as well. What is going on in Tripura? Exactly. See, right now I'm in the trauma center of Agartala GB Hospital, and what we are coming to know that violence are not taking place only in Agartala, but also in why it has spread and other parts of the 6th Agartala constituency and other parts. And we just what we came to know is that the violence started with a BJP supporter, one Ronnie Chakrabarti. He was injured. Though BJP says it was the Congress guys who had injured him while he was accompanying one corporator, Shilpi Shen of Agartala Municipal Corporation. But on the contrary, Congress says that Gandhi had fallen down from his bike after he got panicked. He had entered into the Congress people that they were standing while the counting was going on, and he had fallen down along with his bike and he had injured in his head. And that is how he got the injury. So this is a true part of the stories. But at the same time, once this spread, according to the ST, Mr. Reddy of West Agartala, West Tripura district, the panic it started with, or the violence started with a rumor that is spread. And when this message of a BJP
supporter has been injured in Congress attack. So the BJP supporters got agitated and they had run towards the Congress Bhavan, and which the attack on the Congress Bhavan started. And there Ron, there's a small boy of Congress who is a Congress supporter, though he is not even a voter. He was injured. He was stabbed, in fact, and he is now hospitalized. And there, police had to start with tear gas, and other forces were called in to bring the situation under control. But meantime, some of the Congress people were injured, and good number of motorbikes parked in front of the Congress Bhavan was attacked, and the Two parts of the story there. Yes, two parts of the story, like you said. So, what actually happened at Khowai and Jubaraj Nagar? The name of the BJP guy is Vishal Chakravarti, not Ronnie. Ronnie is the second guy, that is Ronnie Mia, who was in front of the Congress Bhavan. And there it started, and these are allegations and counter allegations that are still going on. At the same time, there are a good number of messages that we are getting in other parts also. This violence has spread. Even city and state, some of their party offices have been attacked, and in Hawaii, it seems the situation is going out of control, and some people have been injured, and they will be rushed to GB hospital. What we came to know from our sources right now, where I'm standing in front of the GB hospital, and we are expecting some injured people to be rushed in right now. Though both parties are alleging each other, but it seems till now the situation is not under control, and Dr. Manik Saha, the new chief minister, he has to take with tough hands to bring the situation under control, or his image may also get tarnished. What the Congress is alleging. Exactly, you rightly said there, Pinaki. Allegations and counter-allegations. Will one ever witness a peaceful, violence-free elections in the state? Thank you so much, Pinaki. Well, the BJP has won 3 out of the 4 assembly seats that went to by-polls in Tripura. While the BJP has won Town Bordwali, Juba Rajnagar and Surma assembly seats, the Congress has emerged victorious in 6 Agartala assembly seat. Now, Chief Minister Manik Saha has won from Town Bordwali seat against his rival from the Congress, Ashish Kumar Saha. After 8 rounds of counting, Chief Minister Manik Saha garnered 17,181 votes and won by a sizable 6,104 votes. Meanwhile, Congress candidate Sudeep Roy Barman won from the 6 Agartala seat. And after 8 rounds of counting, Roy Barman won by 3,163 votes against his rival from the BJP, Dr. Ashok Sinha. A BJP candidate from Jubaraj Nagar, Malina Debnath, garnered 18,769 votes, winning the seat against her nearest rival, Sailendra Chandranath of the CPIM, who managed 14,197 votes. Now, BJP's Surma candidate, Swapna Das Paul, garnered 16,677 votes to defeat her nearest Tipramotha rival by over 4,000 votes. Meanwhile, Chief Minister Manik Saha stated that the results were on expected lines. He, however, alleged that due to the secret understanding between the Congress and the CPIM, the Congress won the Agartala seat and also dented into the BJP's votes in Town Bordwali. Very fine, it was expected, but the margin, I thought that it would be too much, but you have seen the hand gloves with the CPM, with Congress, we have seen in this fray. So in everywhere they have done it. So even though they could not fulfill their dream, so ultimately we have won. One Congress candidate has One has won. In democracy, तो okay, it is expected. I congratulate him. But the problem is we have to calculate how it has happened, because out of 4 seats we have won in 3 seats, but in 1 seat we have lost. But neck to neck fight was there. So we have to see why it had happened. But apparently what I have seen, that there is some understanding between the Congress and CPIM.
Meanwhile, Congress winning candidate Sudeep Roy Barman termed the victory as a will of the masses who were fed up with the alleged BJP misrule. You introspect the result. These people were damn sure, based on muscle power, money power, and administrative or all these things, they were cocksure that they're going to win all the 4 assembly constituencies. And normally, it goes in favor of the ruling party. But for the first time, they're in the wildest dream. The voters of 6 Agartala assembly constituency taught them a befitting lesson. And I believe this is the sentiment of the common people across the state. Meanwhile, Chief Minister Manik Saha had the CPIM to blame for the BJP's defeat in 6 Agartala. BJP candidate Dr. Ashok Sinha said that he fully respects the people's verdict and congratulated Sudeep Roy Barman on the win. যেটা হয়েছে এটা জনগণের ইচ্ছা এবং জনগণের ইচ্ছাই সর্বোচ্চ। You see, when someone competes, he expects to win, but everyone cannot win. One has to win. So Sudeep won. I am happy he's won because people wanted him. Do you accept the people's mandate? Absolutely, there's no question about it. I accept it very happily. You're pretty confident while contesting for while campaigning. Yeah, otherwise What do you think went wrong? nothing went wrong. I got the number of votes that I expected to get. Sudeep got more than what I expected him to get. He won. একটা অসাধারণ ভোট হয়েছে এবং জনগণ যাকে চেয়েছে তিনিই জিতেছেন। Meanwhile, Tipra Motha chief and royal scion Pradyot Kishore De Barma is elated at the party's performance in the Surma assembly seat. Well, party candidate Babu Ram Satnami finished second in the Surma seat. जो ये इलेक्शन में जीते हैं, बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डेमोक्रेसी में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन इलेक्शंस में अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट हुआ और बाय इलेक्शन में एक ट्रेंड रहता है पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, कि जो भी पावर में है स्टेट में वही बाय इलेक्शन जीतता है। आपने ये 2013 में नलछर में देखा होगा, आपने एडीसी में भी बाय इलेक्शंस देखा था जहां में सीपीएम जीत रहा था, 2 साल बाद आईपीएफटी और बीजेपी जीते। तो ये ट्रेंड रहता है कि जो भी स्टेट में रूलिंग में है वो बाय इलेक्शन जीतता है। लेकिन इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। आपने देखा होगा कि अगरतला से सुदीप राय बर्मन जीते हैं और बरदवाली में जहां से हमारे न्यू चीफ मिनिस्टर मानिक बाबू वो लड़ रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल किया है। और जुबराज नगर में बीजेपी जीती है क्योंकि वहां में जो सिटिंग एमएलए थे वो सीपीएम से थे, लेकिन बाय इलेक्शन में बीजेपी जीते। सूरमा के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि तिपरा मोथा सूरमा से लड़ा था। सबसे पहले मैं अपने तिपरा मोथा के लीडर्स को, वर्कर्स को, वॉरियर्स को, टीडब्ल्यूएफ के वॉरियर्स को और वाईटीएफ के वॉरियर्स को सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। क्या फाइट दिया आपने। आज से 1 महीने पहले किसी ने तिपरा मोथा को चांस ही नहीं दिया था कि हम लोग इलेक्शन में कैंडिडेट भी दे सकते हैं कि नहीं। सब कह रहे थे कि तिपरा मोथा कैंडिडेट भी नहीं दे पाएगा सुरमा से, लेकिन हमने कैंडिडेट दिया और आज ये ऐतिहासिक मोमेंट है, हिस्टोरिकल है कि आज एक आंचलिक पार्टी 20 सीट के बाहर लड़ा और लड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको टक्कर दिया और हम आज सेकंड पोजीशन में आए हैं। And with that, we'll take a very short break, but we've got a lot more lined up when we return. Stay with us. Most watched English news channel in Northeast. Number 1 English channel in region. Highest urban and rural viewers in Northeast. Most viewed news channel of Northeast on YouTube.
A university is much more than just a place to get your education. It not only helps you build your career, but also your personality and mindset. At Assam Royal Global University, you will get the most suitable environment to gain knowledge and also grow as a person. The university has the best infrastructure with all the required facilities and best quality equipment for any kind of educational need. মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। Oh, বাহ! Oh, বাহ! অপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। आगे बढ़ने का गर्व, जीतने का गर्व, किसी की खुशियां बनने का गर्व, देश को सुरक्षित रखने का गर्व। ऐसे ही हजारों गर्व के पलों से जुड़ा हुआ है टाटा शक्ति, क्योंकि जब आप जीते हैं गर्व से, हम जीते हैं गर्व से। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আসল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। News to keep you ahead. Evening Prime. Welcome back, viewers, and thank you for staying on. Now, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma today once again reviewed the situation in flood-ravaged Silchar town of Barak Valley. Now, first, an aerial survey, then a boat ride, and finally walking in the waterlogged streets. Chief Minister Himanta Biswa Sharma today went all out to address the concerns of the people of Silchar who had been at the receiving end of floods since the last couple of weeks. Well, the Assam Chief Minister arrived in Silchar only 48 hours after he made his first visit to the flood-ravaged town. Now, after making an aerial survey, Chief Minister Sharma waded through the waterlogged streets on a raft boat. Now, what used to be filled with vehicles today barely has even a bicycle plying. Well, Chief Minister Sharma could be seen reviewing the situation and interacting with the people in distress. Slow, slow, slow. Slow, slow, slow. However, a defining moment of the Chief Minister's visit was when a medical student braced all odds to reach out to Chief Minister Sharma and greeted him with a traditional gamosa. Well, he was later assisted by Chief Minister Sharma's security personnel. In fact, Chief Minister Sharma even promised to visit the homes of a few residents and share a cup of tea once things come back to normal. शर्ट आपका शर्ट फंसा हुआ है आप जाओ आप Just one request, sir. Just read our Mahasharak, sir. Mahasharak, sir. Mahasarak, na? Yes, sir. Yes, sir. I think it will be done in 1 year. Okay, sir. Thank you, sir. So we are big fans, sir. I am extremely sorry. No. Thank you very much. Silchar Engineering College, Medical College. I'll come sometime and have a cup of tea. Okay, sure. Yeah. Sir, no,
হ্যাঁ এটা 100% আমি আসবে নেক্সট টাইম যখন শিলচরে আসবে এটা কথা কম স্যার হ্যাঁ আপনি মানে ফার্স্ট ইয়ার শিলচরত ই মানে ইমান ফ্রিকুয়েন্টলি শিলচরত আহিছে উই আর থ্যাঙ্কফুল টু ইউ লাস্ট নেক্সট টাইম যখন আমি আবার শিলচর আসবে তখন আপনার বাড়িতে আসবো After taking stock of the situation in the town area, Chief Minister Sharma had a crucial meeting with the district's officials to ascertain the availability of medicines besides planning the road ahead in case of fresh rainfall. মেডিচিন পুৰা আছে স্যাৰ যোৱাকালি ORS অলপ কম আছিলে যোৱাকালি 1,95,000 পেকেট আহি পাইছে কালিৰ পৰা অলপ অলপ মেডিকেল কেম্প পানী শুকোৱা জাগাত ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ৱাৰ্ড ৱাইজ আমি কৰি ল'ম ডাক্তৰ যাব মানুহক মেডিচিন বা দি আছে হেল্থ চেকআপ কৰিব এইবিলাক জাগাত পানী শুকাই আছে শুকোৱাৰ পিছতে বেমাৰ লাগে মানুহ হস্পিটেল বেমাৰ লগাৰ পিছত যাব গতিকে আগতে আপোনালোক যাম ORS কিমান আছে এতিয়া যোৱাকালি আহিছে 1,95,000 আগৰ 40,000 আছে While interacting with media persons, Chief Minister Sharma informed that as many as 68 boats are engaged in relief and rescue operations at the moment with the Army, the NDRF and the SDRF men on ground. Well, Chief Minister Sharma also informed that Minister Jayanto Malla Borowa will be camping in Silchar for the next 4 to 5 days to oversee the relief operations. শিলচৰ চহৰ আৰু এণ্টায়াৰ বৰাক ভেলীৰ ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো ৰিভিউ কৰিবৰ বাবে মই ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে আকৌ ইয়াত আহিছিলোঁ অফিচাৰসকলৰ লগত আৰু পাব্লিকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি ৰিলিফ অপাৰেশ্যনটো আৰু কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ এজ অফ নাও অলমষ্ট 68 boats ইয়াতে কাম কৰি আছে আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চেও ইয়াত চাইমালটেনিয়াছলি যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা লোড আনি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে মই ডিচিক কৈছোঁ যে আমাৰ মেডিকেল কেম্প আৰম্ভ কৰিব লাগে ৱাৰ্ড ৱাইজ যাতে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ আউটব্ৰেক হ'ব নোৱাৰে পানীটো সোনকালে ফ্লাছ আউট কৰিবৰ কাৰণে যদি পাম্প চলাব লাগে মই পাম্প চলাবৰ কাৰণে কৈছোঁ যাতে পানীটো সোনকালে ওলাই যাব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড টাইম ৰেইন হ'লে আমি কি প্ৰিকশ্যনাৰী মেজাৰ ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই এডভান্স ডিচিক প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ Significantly, the Assam Chief Minister also ordered an inquiry into the breach of the embankment at Bethukandi, even as he termed the disaster in Silchar as man-made. Well, Chief Minister Sharma also noted that people from vulnerable areas of the town did not take the DDMA warning seriously. এইবাৰ যিটো শিলচৰত ঘটনা হ'ল ইট ইজ মোষ্টলি মেন মেড বেটুকান্দিত যদি আমি মথাউৰিটো ভাঙি নিদিলোহেঁতেন হুএভাৰ এই ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন মই এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছোঁ দিছ থিং উইল ইনকুৱায়াৰ আৰু যোনে মথাউৰিটো ভাঙিছিল দে হেভ টু ফেচ ল আৰু আমাৰ যদি কিবা অফিচিয়েল লেভেলত কিবা তাত প্ৰব্লেম আছিলে অৰ দে ডিড নট এক্ট চুইফলি অবভিয়াছলি দিছ ইনকুৱাৰী উইল অলছ' টেক কেয়াৰ অফ দেয়াৰ লেপছেছ ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে সিদিনাখন যেতিয়া DDMAৰ পৰা ইয়াত এডভাইজাৰী দিয়া হ'ল পিপল ডিড নট টেক ইট মেনি পিপল ডিড নট টেক ইট চিৰিয়াছলি কাৰণ মানুহে এনেকুৱা ফ্লাড আগত কেতিয়াও দেখা নাই চ' মই ভাবোঁ যে ফিউচাৰত দে উইল অলছ' বিকাম লিটল বিট ৰেজিলিয়েণ্ট কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিখিনি ডেমেজ আমি ঘৰ বা আন যিখিনি ডেমেজ হৈছে যিমান পাৰোঁ উইল ট্ৰাই টু হেল্প Now let's cut across live to Hajo in Assam, where Chief Minister Sharma is visiting the flood-affected areas and interacting with the people there. All right, well, these are live visuals coming to us from Hajo. The Chief Minister himself, Himanta Biswa Sharma, is on the location to take stock of the situation so that normalcy bounces back
After his visit and review of the situation in Silchar, he is currently at Hajo. There you have it on your screen. The Chief Minister himself presently present at the spot to take stock of the situation. জিলাৰ দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিত গৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিটো মথাউৰি ইয়াত ছিগি গৈছে খেতি অঞ্চলৰ আৰু ৰাইজে একেলগে পেৰেলেলি ৰোডটো আছে अभी पानी इस तरफ भी गया नहीं गया इस तरफ সংগম স্থান নোনা আকৌ আগত ভাঙিছে বৰলীয়া অকণমান আগত ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আগত ভাঙিছে নৱজ্যোতি হাইস্কুলৰ ওচৰত তাৰপিছত আকৌ ইয়াত ভাঙিলে এইটো পানী ভাঙি একদম কয়া ৰাজহ চক্ৰ এইটো পুৰা আমাৰ এইখিনি চাকুন নগৰপৰা পালেপাৰা ডিপলেং গড়পুল্লা এই গোটেই অঞ্চলটোক লৈ গৈছে একদম হাজোলৈকে এফেক্ট কৰিছে এইটো একদম মানে কিন্তু পানীটো মোস্টলি ৰাইট সাইডত সোমাইছে ৰাইট সাইডে লেফট সাইডে নহয় ৰাইট সাইডে আৰু ইয়াৰ আগত ভাঙাৰ কাৰণে কয়াটো আছে কয়াটো এফেক্ট আগত ভাঙাটোৰ কাৰণে ইটো সাইডত এফেক্ট হৈছে না এই যে আগত এটা মথাউৰি ভঙা বুলি কৈছে সেইটো মথাউৰি ভাঙিলে टोटल केटा मथाउरी भांगिছে ये दूसरा कोई आगे में एक दुखी करके जहां पे वेयर पीपल स्टॉप हियर सर वहां पे एक All right, well, a man on a mission there, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, not taking things lightly from Silchar and then at Hajo that you just saw, taking stock of the situation there on location. And meanwhile, after returning from Silchar, where he waded through knee-deep water to reach out to the affected masses, the Assam Chief Minister stopped by Hotel Radisson briefly while on his way back home from the airport after hearing that a journo engaged in covering the live coverage had developed some swelling in his foot. Well, Chief Minister Sharma stepped out of his car near Radisson and inquired about the health condition of the journo. ऐसे ही मिलने आया था होने से बता देना अगर डॉक्टर से Right, now on to another big story from Sikkim. A major landslide took place in the state today. The landslide took place at National Highway number 10 near Kali Jhora. Well, the debris resulting from the landslide has blocked the road. Now, this has caused disruption of traffic from both ways. Currently, authorities are engaged in removing the debris from the road and clearing it for resumption of traffic. Well, this is the big story that we're tracking from Sikkim. A major landslide took place in Sikkim today. The landslide took place at National Highway number 10 near Kali Jhora. The debris resulting from the landslide has blocked the road, and this has caused disruption of traffic from both the ways. Well, currently, authorities are engaged in removing the debris from the road and clearing it for resumption of traffic. Lo saqué a yo. And moving on now, the centre has provided Y+ category security cover to rebel Shiv Sena MLAs who are camping in Guwahati.
Now, as per reports, the Y plus category security cover has been allotted to only 15 of the rebel Shiv Sena MLAs, which include Ramesh Bornare, Mangesh Kudalkar, Sanjay Sirsat, Latabai Sonawani, Prakash Surve, Sadanand Saran Avankar, Yogesh Dada Kadam, Pratap Sarnaik, Yamini Jadhav, Pradeep Jaiswal, Sanjoy Rathore, Dajji Bhuse, Dilip Lande, Balaji Kalyanar, Sandeepan Bhumare, among others. Meanwhile, rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde held a crucial meeting in which an exit plan was discussed. Well, Shinde assured that rebel MLAs that all of them would be getting Y plus security cover once they return to Mumbai. Well, tomorrow, the Eknath Shinde camp is likely to approach the court, challenging the Deputy Speaker's suspension notice to 16 rebel MLAs. In the next couple of days, there is a possibility that the Eknath Shinde camp may stake claim to form the government in Maharashtra in alliance with the BJP. Meanwhile, another Maharashtra cabinet has arrived in Guwahati and has joined the Eknath Shinde camp. Maharashtra Higher and Technical Education Minister Uday Saman today arrived in Guwahati from Surat via a chartered flight. With this, Saman has become the 8th state minister to join the Shinde camp. And with this, except for one, all the cabinet ministers in the Uddhav Thackeray government have jumped ship to the Shinde camp. Now, the only cabinet minister to remain in the Uddhav Thackeray camp is his son, Aditya Thackeray. Meanwhile, amid the political turmoil, the rebel MLAs found some time to celebrate the birthday of Bhandara MLA Narendra Dhondekar. While the MLAs celebrated Dhondekar's birthday at the Radisson Blu Hotel in Guwahati with a birthday cake. While Eknath Shinde and the other rebel MLAs were present during the celebrations. Along with Tripura, the counting of votes for the by-elections in Uttar Pradesh, Punjab, New Delhi, Andhra Pradesh also took place today. And in what has come as a massive victory for the Yogi Adityanath-led government, on one hand, the BJP has won both the Azamgarh and Rampur Lok Sabha constituencies. Well, this has emerged as a big setback for the Akhilesh Yadav-led Samajwadi Party, as both these seats were their strongholds. आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है. Aam Aadmi Party candidate from Delhi's Rajendra Nagar constituencies, Durgesh Pathak, too lodged a thumping victory. Durgesh Pathak won by over 11,500 votes over BJP's Rajesh Bhatia, Delhi's Rajendra Nagar Assembly constituency. राजेंद्र नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीती है और इतने भारी मैंडेट से जीती है. मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा. ये जीत अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा कराए जाए काम, राजेंद्र नगर की जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है. इतने शानदार रिजल्ट आए हैं. मैं सबको धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ जो भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर जताया है लोगों ने, उस भरोसे और विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा.
भारतीय जनता पार्टी से अब ये आग्रह कहता हूं और चुनौती भी देता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, हर तरफ कूड़े पड़े हुए हैं। दिल्ली के लोग जब घर बनाते हैं तो बीजेपी के काउंसलर उनसे पैसे मांगते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन भी करता हूं और ये चुनौती भी देता हूं, एमसीडी के चुनाव कराएं जल्द से जल्द, और एमसीडी के चुनाव कराकर दिल्ली के लोग ये डिसाइड करें कि अब उनको एमसीडी में किसकी सरकार चाहिए। Simranjeet Singh Mann of Shiromani Akali Dal has won from Punjab's Sangrur Lok Sabha seat. Now, Sangrur Lok Sabha seat was vacated by Bhagwan Mann, who came to power as the state chief minister after the Aam Aadmi Party secured a landslide victory in the recently held assembly polls in Punjab. Now, meanwhile, counting of votes also took place at Atmakuru in Andhra Pradesh. Now, Vikram Reddy of the YSR Congress wins by 82,888 votes, defeating BJP's Bharat Kumar Gandlapalli in the Andhra Pradesh's Atmakuru. Environmental activist Lichipriya Kanthojam is in Assam to raise awareness about the flood scenario prevailing here. Well, the 10-year-old activist hailing from Manipur is in Assam and is spreading her times among the flood-affected people in the state. Well, noteworthy here is that Lichipriya was in the news recently when she had highlighted the rampant pollution near the Taj Mahal in Agra. फ्लड विक्टिम्स को मैं हेल्प करूं, उनकी कुछ मदद करूं, क्योंकि मैं इतना तो नहीं दे पाती हूं उनको, मैं इतना तो मदद नहीं कर सकती हूं, लेकिन मैं उनके चेहरे पे स्माइल ला सकती हूं। वर्ल्ड को कुछ मैसेज देना चाहती हूं कि असम को आपकी जरूरत है, आपकी मदद लें, उसको असम के लोगों को आपकी मदद चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत सारे लोग भी मरे और 100 अबव लोग मरे, बहुत सारे बच्चे भी मरे और स्मॉल बेबीज है ना, वो भी ये सब सहल रहे हैं। When I reached ताजमहल तो मैं बहुत जैसे शॉक हो गई थी कि वहाँ पे कचरा ही कचरा था, कूड़े थे, जैसे ताजमहल एक कूड़ेदान है, वो एक डस्टबिन तो नहीं है, वो एक बहुत प्रेशियस मॉन्यूमेंट है और मेरी एक ट्वीट की वजह से अब वहाँ पे साफ सफाई हो रही है। And with that story, we end the bulletin. I'm Aaron Lingdo. News and updates continues.